You all have broken down very beautifully what love for learning looks like, what it sounds like, and how it reaches the home of the children, to the parent, right? What we're now trying to push you to think is, when you see this smiling face, you say, okay, this is good. Balloon has to be balanced between two sticks. So if they both do not, cooperate with each other, so the balloon can fall down. So there's one word for this job, the kind of a job they are doing together. Yes. Teamwork. Learning as a team together and cooperating with each other. Patience, ma'am. Patience is also there. That if ma'am had given the child the answer that it is a synonym, and yes, it's a synonym. This is done or not, or it is a theoretical question in the class. So I feel metacognition to be taken up in the classes. How we structure our questions or what activities we structure in the class would have a very, very vital role in metacognition. So that is why I wanted to share these two examples. Thank you, ma'am. Thank you, Shruti ma'am. That's very interesting. I'm unsure about the first question that Shruti ma'am shared. Is it just higher order thinking or is it metacognition? To me, as of now, and I haven't seen her full lesson plan, so benefit of doubt to her. But right now, it seems to me that it is higher order thinking. It's analysis, etc. It's not exactly metacognition. Anybody else has any thoughts differing to this? I mean, open. Anybody else who saw metacognition happen in the class, or actually even the mentees, if they feel they've done a bit of metacognition, please share. Yeah, so Hasini ma'am, I would like to, in my understanding, when the DART activity was done, they wrote the answer in the stream. Then I gave them some time to assess their own answer, find out the mistake and correct it. And commonly we reached on one thing, that students, they have a proper prior learning with them. They are definitely interested in learning, but they are less interactive. If I talk about grade 2 students, they were quite comfortable with the concept of 2-digit numbers. However, we also faced the same problem. They were less interactive. But for that, we have planned certain activities, rather I would say group activities, to engage them more. Like giving them hint is making it easier for us and making it comfortable to them also to interact in the class and to give answers. So we all feel that we should incorporate more and more active learning strategies using group work to make the students more comfortable in this environment. I feel I need to plan some group work that they can be able to become familiar with one another and become comfortable, and then they will start interacting even better. I tried doing thinking pressure in one of my classes, and I noticed that they were able to actually think well. They were able to think aloud, they were able to share their thoughts. 3 pictures from a daily life, as you all can see. Can you all correlate something from it? And the first picture shows that a man is pushing the car to increase the speed. So basically the car is in the stop condition and man is going to push it. And ma'am, what does the secondary picture represents in the 11.2 figure? 11.2 figure. First, 11.2 first figure, the man is standing, and in the second picture he is pushing so that it can start and it can take up the speed. If we talk about 11.3, the two girls, they are pushing each other. Right, ma'am. And 11.3, both the girls, they are playing and they are pulling each other into the different directions. And what about the last one? Any one of you? Anyone else? Swati ma'am, what does the last picture represents? He's pulling. Right. So the man is pulling that bull towards himself, and the bull is also opposing it, right? ये बहुत ही important settings हैं. मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेफ्टी टॉप प्रायोरिटी है, तो प्लीज नोट कर लीजिए.
आप अगर दोबारा मीटिंग करने के लिए कहेंगे, यू आर मोस्ट वेलकम, हम दोबारा मीटिंग कर लेंगे, बट ये होनी चाहिए। एंड पूनम मैम, सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि यू विल इंश्योर कि ये सेटिंग्स लोगों ने कर ली हैं। ओके, वेटिंग रूम हमेशा ऑन रखना है। सो अगर ये ब्लू आप देख रहे हैं तो ऑन है, अगर आप ग्रे देख रहे हैं so off है। So you can toggle between them, right? Okay. So require password पहले हम लोग हटा सकते थे, अब हम नहीं हटा सकते, पासवर्ड होना ही होना है। जो फिजिकल हमारा क्लासरूम है उसे पूरी तरह हमने वर्चुअल में तब्दील किया, और उसके साथ साथ में जो हमारे पूरे प्रोसीजर्स हैं इवैल्यूएशन के, वो भी हम बहुत अच्छे से इन टूल्स के साथ कर पाए। प्रैक्टिकल भी और थ्योरेटिकल भी, डिस्क्रिप्टिव भी, ऑब्जेक्टिव भी, सभी किस्म के टूल्स हम सभी किस्म के मूल्यांकन हम कर पाए। हमें बहुत आसानी हुई थी, बच्चों ने ड्रॉ किया नोटबुक पे, पिक्चर क्लिक करी और उसको अपलोड किया, और उनको लेबलिंग करना और बहुत आसानी से इस चीज का basically ma'am, in languages also the grammatical errors or spellings, everything, so file upload is useful in each and every subject. डेफिनेटली। मैम एक क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, सब्जेक्टिव पेपर चेक कैसे कर सकते हैं हम गूगल फॉर्म्स में, ये बता दीजिए। मैम हमने सब्जेक्टिव पेपर ऑटोमेटिकली चेक नहीं होते हैं, आप लोगों को उसका इमेज जो भी बच्चे ने भेजा है उसको इमेज को ओपन करके उसमें चेक करना पड़ा था। सो आप लोग को उस इमेज को ओपन करना पड़ेगा और उसके थ्रू उसको आपको चेक करके फिर आपको उसके नीचे बच्चों को कमेंट्स देना पड़ेगा कि इसमें ये गलती थी या आपके इतने मार्क्स आए हैं, तो उस तरीके से आप उसको चेक कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली सब्जेक्टिव फाइल अपलोड्स चेक नहीं होंगे। आप गूगल ड्राइव में जाकर गूगल ड्राइव में आप जाकर फाइल ओपन करें और वहां से आप चेक करके अपने बच्चों के साथ उसका रिजल्ट भी शेयर कर सकते हैं उनकी मेल्स पर। और गूगल अर्थ ने उन सभी लर्नर्स को भी प्रभावित किया जो कक्षा में कम भाग लेते हैं। सभी बच्चों ने अपने घरों में इस ऐप को एक्सप्लोर किया और कक्षा में अपना अवलोकन प्रस्तुत किया। यह तो बहुत ही आकर्षक लगता है। मुझे यकीन है कि शिक्षार्थियों ने इसके माध्यम से सीखने का आनंद लिया होगा। तो ऋचा मैम, आपने गूगल अर्थ का उपयोग अपनी कक्षाओं में कैसे किया? हर्षिका मैम, एक बुद्धिमान व्यक्ति ने खूब कहा है, टेल मी एंड आई फॉरगेट, टीच मी एंड आई रिमेम्बर, इन्वॉल्व मी एंड आई लर्न। ये प्रसिद्ध उदाहरण शिक्षकों द्वारा सिद्ध किया गया है, जिसे अब हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहते हैं। आपने देखा होगा विद्यार्थी हमेशा अपनी पुस्तकों में लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं।